The COVID-19 epidemic has caught the whole world. Today, COVID-19 has caused chaos all over the world. Due to lack of accurate information about corona, many people got infected and died. Also, many social organizations, NGOs and Indian government came forward to make people aware of COVID-19. In this regard, USAID, Government of India, UNDP project in collaboration with MC Shimla worked together to make people aware about COVID-19 through UNDP project of developing resilient cities through risk reduction in disaster and climate change. United Nations Development Program help countries to develop strong policies, leadership skills, institutional capabilities and build resilience so that development can be sustainable. Let's shed a little light on how UNDP and MC Shimla works together to control this epidemic in Shimla. Various activities undertaken such as hand sanitization and wearing mask. Social distancing was undertaken for awareness in 4 slum areas of the city. Awareness campaign was undertaken in collaboration by City Project Coordinator UNDP Dr. Harkanchan Singh with the Health Department of MC Shimla under the guidance of the Corporate Health Officer Dr. Chetan Chauhan and his team of sanitary inspectors and coordinators who provided the details of hygiene, social distancing, mask, along with which the children in the slums were provided a knowledge management kit and females in the slums were also provided with sanitary pads for hygiene awareness and good health. हमने इस वर्ष जो कि कोविड का ईयर रहा, हमने काफ़ी एक्टिविटीज़ की यूएनडीपी के साथ मिलकर एमसी ने, और इसमें हमने प्रमुखता पहले आम जनता को कोविड के बारे में जागरूक करने के लिए जिंगल्स बनवाए जो कि हम रेगुलरली रिले करते रहे एफएम रेडियोस पर, दूसरे चैनल्स पर, जिससे कि जनता को अवेयर किया जा सके कि वे सब मास्क पहने, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, प्रॉपर हाइजीन, हैंड वॉशिंग करते रहें। इसी के साथ हमने स्लम एरियाज में बहुत जगह मास्क और सोप डिस्ट्रीब्यूट भी करवाए। 12 वार्ड्स में हमने एक स्पेशल कैंपेन भी चलाया जो कि स्पेशली ओरिएंटेड था एल्डरली लोगों की तरफ, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल थे कोविड टाइम्स में, और स्पेशल केयर फॉर एल्डरली को लेके हेल्पेज इंडिया की भी सपोर्ट लेते हुए हमने 12 वार्ड्स में इस कार्यक्रम को चलाया। और ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन शिमला एक ऐसी थी जिसने इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कोविड अवेयरनेस के लिए होर्डिंग्स लगाई हैं, लोगों को स्थान स्थान पर जाकर के जागरूक किया है, एफएम के माध्यम से जागरूक किया है और सोशल मीडिया के माध्यम से भी जागरूक किया है। लोगों को घर घर जाकर के, स्लम एरियाज़ में जाकर के हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है, और साथ साथ में उनको उससे संबंधित जो प्रोडक्ट्स थे, चाहे मास्क थी, सैनिटाइजर्स थे, वो प्रोवाइड भी किए गए और उनको कैसे उपयोग करना है उसके बारे में भी जानकारी दी गई। और इस जो कोविड वाला समय था, इसमें शिमला में शिमला शहर को 5 जोन्स में बांटा गया था, जिसमें सीनियर जो अफसर थे वो लगाए गए थे। एक एक घर जहाँ पर रोगी थे या जो क्वारंटीन वाले हाउसेस थे, उनके घर से कूड़ा उठाना और वो पूरा ध्यान रखना, वो सारा सब कुछ उसमें अच्छी तरह से मैनेज किया गया था। A 3-day webinar was conducted by NIMHANS, National Institute of Mental Health and Neurosciences, Bengaluru, Psychosocial Care in respect of COVID-19, Unlock and Stigma Removal of the Community regards to spread of coronavirus. The session was inaugurated by the then Commissioner
Shri Pankaj Rai. and Shri Ajit Bharadwaj, Additional Commissioner Shimla MC, along with Dr. K. Sekar, Professor and Head, Center for Psychosocial Support in Disaster Management, CPSSTM, Dr. Jaya Kumar, Dr. Sanjeev Kumar, Dr. Rupesh, Dr. Ajay Kumar, Dr. Dinakaran, Mr. Lithin Zacharias, Himachal Pradesh and City Project Coordinator UNDP Dr. Harkanchan Singh. Online 4 days yoga session were conducted by the teachers of Art of Living Shimla section, Miss Dhara Saraswati and Shri Abhay Sharma, for the inmates of institutional quarantine centers across the city and Shimla district under the COVID-19 initiative of UNDP project at MC Shimla. Sensitization initiative in wards for capacity building of persons was in 12 wards of the city on COVID-19 under awareness campaign. 4-day campaign across Shimla city was undertaken by UNDP MC Shimla in collaboration with Himachal Pradesh State Red Cross Society and HelpAge India. IEC material for awareness among the community for proper disposal of the domestic and biomedical waste. The threefold IEC pamphlet includes the detail on segregation of wet and dry garbage from both domestic and commercial buildings. The United Nations Development Programme help countries build resilience among the community and institutions towards risk reduction and sustainable development goals of disaster management. On public awareness regards to precautions against COVID-19 by wearing mask, sanitization and maintaining distance. And awareness campaign through different hoardings in Shimla city. As disasters are unpredictable, the initiative of awareness campaigns under UNDP MC Shimla shall continue beyond COVID-19 for the capacity and resilience building of its citizens of Shimla.